projects क्या है that's as big as Kumkum in the near future? Because you said you concentrate only on a few things. तो उस हिसाब से Right now, Devi will be getting over soon, as you know. So, I'm really looking forward to a break. I have not taken a break for past 2.5 years since the time Kumkum started. So इस वक्त मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ कुमकुम के अलावा. मैं थोड़ा टाइम चाहती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती हूँ. और जैसे ही लोगों को पता चला है कि आई हैव लिटिल टाइम आफ्टर कुमकुम, पीपल हैव अप्रोच्ड मी फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स. बट इस वक्त मैंने कोई स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त आराम करना चाहती हूँ और सिर्फ कुमकुम करना चाहती हूँ. आई थिंक आफ्टर 2 months or so आई विल थिंक ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट. so that means you have nothing on hand. नो, तेरे इश्क में, which will come in Pakistan, which was a great experience, a different feel altogether. And I have a lot of offers from Pakistan again, because I should mention that this is when I went there, I got to know कि Kumkum is the #1 show in Pakistan above all the other shows. It's on the topmost rating there and the #1 show there. तो ये शो करके, and I have got a lot of calls from other production houses in Pakistan. So in case I want to do a small bit and come back, ये बेस्ट वे है, क्योंकि 13 episodes and it gets over, no long commitment. And तब तक I can wait for the right role to come my way and start on with that. तो आप रोल में बिलीव करती हैं, जैसे कैरेक्टर में believe Definitely. Character is the first and the foremost thing. और फिर एक मिनट रणवीर, लाइटिंग हो रही है अभी मुझे बाजी उसने कहा मंगेश ने कि वो लाइटिंग कर रहा है. रोल इज देयर एंड एज आई सेड, चैनल, प्रोडक्शन हाउस, लॉट ऑफ थिंग्स मैटर, बट रोल कम्स फर्स्ट. आपको ये बर्नआउट थ्योरी, आई एम सॉरी माय हिंदी इज वेरी बैड, पर काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस एक्चुअली सेट पर फेम हुए हैं, और वैसे तो आप ये प्रेशर और स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं? बहुत मुश्किल होता है ये हैंडल करना. कई बार तो यू फील दैट यू शुड रन अवे, क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है प्रोटैगनिस्ट पे, एज आई मैंशनड अर्लियर ऑल्सो. सी, कोप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे मिनिमम वर्किंग आवर्स 12 घंटे होते हैं, और उसके ऊपर भी कई बार चला जाता है. कई बार सुबह 9 से रात को 2-2 बजे तक काम करना पड़ता है. लाइक अभी दिसंबर में ही 19th दिसंबर से 24th दिसंबर तक आई हैव शॉट 9 in the morning to 2 in the night every day, because Devi pressure and Kumkum pressure was equal, year end, delivery of the episodes and all that. So बहुत मुश्किल होता है. कोप अप सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं कि आई हैव लर्नड साइक योर सेल्फ. I have psyched myself. You have to do it, you have to do it. You crib, you cry, you depress yourself. The ultimate thing is that you will have to do it. अब दुखी होकर, उदास होकर, परेशान होकर करो, इससे तो अच्छा है psych yourself and prepare yourself mentally and do it. So earlier I used to get depressed कि how will I work so much, how will I do this, that. Now इट्स एक्चुअली काम का प्रेशर भी अब पहले से ज़्यादा स्मूदन हो गया है, बिकॉज कुमकुम इतने वक्त से शूट करते करते बहुत ही सेटल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ डेट्स. लाइक 1st to 16th वी शूट एंड इट्स मच मोर रिलैक्सड एंड ईज्ड आउट. इट्स नॉट दैट माई वर्क प्रेशर इज कम टू अ लेसर अमाउंट, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई जस्ट बेसिकली डोंट थिंक अबाउट इट टू मच एज अ प्रेशर. वेट फॉर द 16th टू कम, बिकॉज आई नो आफ्टर 16th आई एम फ्री. क्योंकि काफ़ी सारे कहानियाँ हम लोगों ने सुनी है कि मौली गांगुली में शी फेंटेड ऑन द सेट और दैट, तो आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ. आई एम अ राजपूत, सो आई एम प्रॉब्ली स्ट्रॉन्गर, बट जोक्स अपार्ट, हाँ मैं बीमार मैं भी पड़ जाती हूँ, बट नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर ओनली. द रीज़न इज़ दैट आई हैव अ थ्रोट प्रॉब्लम since childhood. So whenever I have a sore throat, I fall ill. So the sad part is that when you are ill, तब भी आपको काम करना पड़ता है. कई बार I have had very high temperatures, but the pressures have been so much that you can't even blame your producers. उनका भी सर पे डिलीवरी डेडलाइंस होती हैं, चैनल के सर पे डेडलाइंस होती हैं. The telecast has to be on, the show must go on. So we have to work. It's a part and parcel of television. I have kind of
this has sunk in me now, so it does not affect me anymore. पर आप कभी भी physically burn out नहीं हुए? I have been. I've been exhausted so many times. कई बार बिल्कुल काम नहीं किया जाता. You have to drag yourself to shoot क्योंकि it becomes too much of a pain to get up in the morning also and shoot. क्योंकि कई बार your body just gives it back कि नहीं हो सकता है. But you have to do it. As I said, show must go on. Sexiest way on television. Oh, this is such a Everyone this question. So. this is such a difficult one. Ask me the sexiest male in films, I'll tell you. Abhishek Bachchan. He's the hottest guy. Television. One man, God. Uh, I'm sorry. I find Abhishek Bachchan hot. अच्छा काफ़ी सारे लोग ने कहा है like you yourself told me that you get along very well with Hussain. Yeah. And your chemistry with him is also very good. So can you just Yeah. expand on that a little bit? See, Hussain ke saath, it's such a coincidence that the way the story has progressed, Hussain and my friendship has also progressed. In the beginning, we were in the show also, like when we got married, there were a lot of differences between Kumkum and Sumit because Sumit was her brother-in-law and all that. तो तब the chemistry was supposed to be that way. So उस वक्त जब हमें awkward scenes करने होते थे तो we used to be awkward actually. Because he was not a friend at that time and Hussain is a total introvert. He takes a very long time to open up and I am a total extrovert. So we are two opposite poles. So we were not friends for a year of the show. The first year went by only with hellos and highs and not even byes properly. And by the time the story also was progressing and we got to know each other more, we became such good buddies that today he is my best friend. I share everything with him. I take his advice. I ask him about everything. What should I do? Should I do this? Should I do that? And he's like my advisor. And seriously, he'll give me advice. I think you should do this and all. या वो तो मुझे नहीं ऑडियंस को भी लगता है हमें बहुत फ़ैन मेल्स मिलते हैं और कुमकुम सुमित द पेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेयर्स ऑन टेलीविज़न बट इसकी वजह यही है कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है हमारे बीच सो दैट हेल्प्स अ लॉट इन द सीन्स क्या होता है ना कई बार अगर आप अपने को एक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कांट डू वेरी फ्रीली और अगर वो परफॉर्मेंस में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो इट शोज़ ऑन स्क्रीन वेरएज जब हुसैन और मेरे सीन्स होते हैं तो बहुत ही फ्लुएंटली वी डू द सीन्स वी नो ईच अदर वेरी वेल बाय नाउ सो हमें पता है कि इस लाइन पर ही विल रिएक्ट लाइक दिस एंड आई विल रिएक्ट लाइक दिस लाइक 90% ऑफ टाइम्स हुसैन के साथ सीन्स जब होते हैं तो आई डोंट नीड टू टेक ग्लिसरिन it's just the give and take is so good that it automatically comes out and it helps a lot and he's a great co-actor he helps you a lot even if it is his back in the shot he will emote as much as he will in his clothes so I have learned so much from him like if it is my clothes and he's not required still he'll sit next to the camera and give me the cues क्योंकि अगर आपका co-actor आपको cues देता है तो feel comes out much better and easily so all that helps a lot there's no one-upmanship between Hussain and me we always work towards making the scene a better one or make it work it's never that ki my performance should be better or Hussein's performance should be better and we fight a lot off screen but not actual fights the friends fight that you did this and you did that and all that and we keep bullying each other I trouble him a lot he's such a sweet guy he never gives it back to me but he troubles me in his own way and I think I've spoken so much about him that by now you know that we are such good friends that I can keep on talking about him because I keep on talking to him so much and that is one of the biggest reasons that our chemistry is so good on screen आप मनीष गोयल के साथ भी काम किया है और सुनने में आया कि he's a very difficult person to handle no I think he's very sweet to work with
I have had no problems with Manish. I'm not saying this because I'm sitting in front of the camera, but honestly, see, अपने moods और अपनी personality हर किसी की अलग अलग होती है. बट जहाँ तक वर्किंग केमिस्ट्री है मनीष के साथ, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम ऑल्सो. ही इज़ अनदर पर्सन जो अपने को एक्टर की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए पूरी कोशिश करता है. ये नहीं कि इसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए. जो कुछ 2-4 नाम हैं मेरे को एक्टर्स के जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल रही हूँ काम करने में, मनीष इज़ वन ऑफ देम. We got friendly very soon working on Devi, which again helped a lot in doing so many scenes. Improvise करना बहुत easy हो जाता है. और सबसे बड़ी चीज़ that when you have to hold your co-actor, you don't have to think before touching the actor that, oh, I hope he does not mind. You can ask, okay, in this line I'll hold your hand and I'll do this and I'll do that, and it becomes much easier. So I think Manish is too sweet to work with. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. आप जस्ट क्लियर दिस आउट बिकॉज आई नीड दिस वन बाइट कि आप इसलिए एक्सक्लूसिव है. इट्स नॉट दैट बिकॉज यू आर नॉट एम्बिशियस, राइट? तो एज इन लोगों को ऐसे लगता है कि आप इतने रोल्स नहीं लेते हो, उसकी वजह है कि आप इतनी एम्बिशियस नहीं हो. It's not that I'm not ambitious or I'm very ambitious. सबका अपना अपना करियर ग्राफ अपने हिसाब से होता है. बहुत तरह के रोल्स होते हैं जो कई लोग कर लेते हैं, जो मैं कभी नहीं करूँगी. It depends on an individual. I would love to be doing too many roles, but not at the same time. I want to experiment with different kind of roles, and I love acting. मैं आखिरी दम तक एक्टिंग करना चाहूँगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं इतना सारा काम एक साथ कर लूँ कि एज एन एक्टर मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने को कुछ ना बचे. एज एन एक्टर ऑडियंस को when we cater to audience our performance. So I want to keep that freshness. Like कुमकुम में जब डबल रोल आया था, तो कुमकुम और चंदा they actually looked like two different personalities. I was told by so many people कि ऐसा नहीं लगता that it's the same person doing two roles. It looks like two different characters. चंदा perform करते वक्त I had changed my voice also. Like Kumkum talks very much in bass and she's very sophisticated, but Chanda was very uncultured, uncouth. So she would talk on a very high pitch. She'll scream too much and very shrieky voice she had. So I've tried like there were scenes where Chanda and Kumkum were face to face. So मैंने बहुत कोशिश की थी कि आवाज़ का फ़र्क भी रहे, कि इंसान बिल्कुल एक जैसी आवाज़ नहीं कर सकता. जब किसी सीन में Chanda had to play Chanda and Kumkum. Like a family member is there, she's enacting as Kumkum and she'll be talking in bass. And the moment that person leaves and she'll be like, oh, this. She was very, she had a very frivolous body language also. Whereas Kumkum is always very calm and composed. So, बहुत सी चीज़ें होती हैं which you can work on when there are different characters. But television में एक ही वक्त में आप बहुत सारा काम कर लोगे, तो फिर आप क्या ऑफर करोगे ऑडियंस को? आई वॉन्ट टू कीप सरप्राइजिंग माई ऑडियंस every now and then and keep offering them better and better performance every time. I expect this from myself.